The global air temperature distribution is always be in two areas. Number one is the horizontal distribution of the temperature, and number two is the vertical distribution of the temperature. So vertically also temperature distributed among the layers. But the most important area where we have the vertical distribution of the temperature और study जहाँ पर मौजूद है और जिसकी study करना बहुत ज़रूरी है, that is the troposphere. Now in troposphere, the temperature decreases with increase in height. So this temperature decrease is actually called the environmental temperature lapse rate. So this is 6.5 degrees Celsius per 1000 meters. So temperature decreases with the ratio of 6.5 degrees Celsius per 1000 meter. So this is called the environmental temperature rate, lapse rate, or in other word, the tropospheric temperature lapse rate. So in this slide, we can see that the 100% energy is coming from the sun, and this energy is in the form of shortwave radiations. तो ये एनर्जी इस तरह से हमें मिलती है और इस 100% में से 50% जो है वो अर्थ रिसीव करती है, जिसको हम डायरेक्ट रेज कहते हैं. इन डायरेक्ट रेज में से जो 50% है वो डिफ्यूज्ड है, जो कि क्लाउड से हमें पेनिट्रेट होने के बाद सरफेस में ये हमें एनर्जी मिलती है. सो दिस इज़ एक्चुअली टोटल जो है का 50% है. अगर हम इन 100 में से देखें तो 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वेयर एज जो 70% है दैट इज़ एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड में हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें डायरेक्ट भी है और एब्जॉर्ब भी है. नाउ इन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एयर में डस्ट भी मौजूद है, प्लूटेंट्स भी हैं, क्लाउड्स भी हैं. सो ये तमाम जो कंपोनेंट्स जो हैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सम ऑफ द एनर्जी वो उसको सरफेस की तरफ भेज देते हैं और सम आर एब्जॉर्ब, टोटली एब्जॉर्ब. एंड इन 30% दी कंपोनेंट्स आर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, क्लाउड्स हैं और ग्राउंड पे भी सरफेस पे जो वाटर मौजूद है वहाँ से भी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट होती है. So this is actually all about the incoming solar radiations. Now here we have actually again the atmospheric insulation, जो surface के ऊपर air मौजूद है जिसे हम atmosphere कहते हैं, is like an envelope. वहाँ पर जो top of the atmosphere में जो insulation है वो इसमें slide में दिखाई गई है. तो most of the area जो है which is actually closer to the equatorial regions and tropical areas, those are actually have हाईएस्ट इंसुलेशन, जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 438.3 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर जो है हम एनर्जी यहाँ रिसीव करें. वाई? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रेज. वेयर एज जो उसका अपर रीजन है जिसको हम मिडल एटीट्यूड्स के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ हम जब मूव करते हैं तो एनर्जी कम हम रिसीव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर. सो वाई? बिकॉज ऑफ द टिल्ट रेज. So this actually is controlled by the situation of the rays, direct rays and tilt rays. This slide shows the high temperature in the southern hemisphere during the months of January. So the direct rays are over the Tropic of Capricorn. So this line actually is a Tropic of Capricorn, and here is the equator, and this is actually the Tropic of Cancer. तो सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ी हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर. सो यहाँ पर जो नेट रेडिएशन है वो बढ़ गई है. व्हाट इज़ नेट रेडिएशन? नेट रेडिएशन एक्चुअली इज़ व्हेन देयर इज़ मोर इनकमिंग रेडिएशन देन आउटगोइंग रेडिएशन. सो यहाँ पर इनकमिंग रेडिएशन बढ़ गई हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग रेडिएशन. आउटगोइंग रेडिएशंस को हम अर्थ रेडिएशन भी कहते हैं, या जो कि लॉन्ग वेव में होती हैं. सो यहाँ पर नेट रेडिएशंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट है. सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गई है. ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त द एरिया अंडर हाई टेम्परेचर जोन्स इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो हियर इज इक्वेटर and this is actually the tropic of cancer. So most of the energy is shifted toward the northern hemisphere because the sun is actually providing the vertical rays over the tropic of cancer. So the net radiation shifted toward the northern hemisphere, जो कि positive हैं.
और यहाँ पर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर मोर देन द आउटगोइंग रेडिएशंस हैं, वेयर एज सदर्न हेमिस्फीयर जो है लो टेम्परेचर जोन में शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द टिल्ट रेज. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कि यहाँ वर्टिकल रेज की वजह से टेम्परेचर जोन शिफ्ट हो रहे हैं, कभी ये साउथ में होते हैं, कभी ये नॉर्थ में होते हैं. So in positive net radiation, the most of the energy is coming from the sun, whereas in negative radiation, the energy is maximum coming from the surface of the earth. Or you can say here कि जो long wave radiations हैं वो बढ़ गई हैं as compared to the short wave radiations. So this is controlled by the surface environment as well as the sun rays.